हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं E24 न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आंख मारे ये लड़की आंख मारे। मेरे साथ इस वक्त प्रिया प्रकाश वॉरियर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बताइए, ज़िंदगी में कितना बदलाव आया था वो आंख मारने के बाद? पर्सनली बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बट प्रोफेशनली डेफिनेटली अ लॉट ऑफ चेंजेस हैपेंड बिकॉज आई वाज जस्ट अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन वाज ट्राइंग टू मेक इट बिग. So definitely professionally a lot has changed, but personally it's all the same. इंस्टाग्राम में याद होगा आपको कुछ कि कितने फॉलोअर्स थे और किस हिसाब से इजाफा हुआ था उस टाइम पे? पहले तो मेरा आई थिंक क्लोज टू सिर्फ 1000 समथिंग फॉलोअर्स थे बिफोर आई स्टार्टेड ऑफ. आफ्टर दैट maybe in 2 days or 3 days 1 million and then it just kept growing. Yeah. अच्छा, फैमिली कितनी सपोर्टिव है आपको लेकर? मतलब जैसे शुरुआत में जब आपने करियर की आपने चूज़ किया कि मुझे एक्टिंग में जाना है, जो भी है, पेरेंट्स से डिस्कस किया, किस तरह से वो हमेशा आपके साथ रहे हैं? मैं बचपन से बोलती आ रही हूँ कि आई वांट टू बी एन एक्टर, बट उन्हें नहीं पता था कि मैं कितना सीरियस हूँ उसके बारे में. सो when I started auditioning is when they understood कि हाँ she is serious about it. But they told me that don't compromise on your studies, otherwise that's education's all you're gonna have in the end. So studies and acting, if you can maintain together, then go for it. और शायद यही वजह थी, एक बार आपका कहीं ऑडिशन हो भी गया था, इसी वजह से आपने एग्जाम्स की वजह से उसे छोड़ दिया था. Yes, the first time सबसे पहले ऑडिशन I did when I was in 11th or 12th grade. और उसके बाद मेरा 12th grade का एग्जाम्स आ गया था और पूरा क्लैश हो गया, तो I was very upset कि मैं जा नहीं पाई. उसके बाद then when I got into college, the first year फिर से auditions, then I got into it. आज दिल्ली में कैसे आई हैं आप? I'm here for actually a cyber awareness campaign that is related to the Skill India, and I'm also here for to like talk about my movie that I've done, Love Hackers. So that's also about cybercrime. So I think it's a very important issue that needs to be addressed, and I think I would be honored to be a part of it because it's a great opportunity for me, because whatever traction I got overnight or throughout the journey is because of social media. So I feel like it'll be perfect for me to talk about it. So yeah. मतलब सोशल मीडिया आपकी लाइफ में एक एडवांटेज लेके आता है, लेकिन कई लोगों की लाइफ में डिसएडवांटेज भी लेके आता है. बट कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इस बारे में वोकल नहीं होते, वो बात नहीं करते खुल के. कुछ लड़कियां भी ऐसी होती हैं कि उनके साथ अगर कुछ क्राइम ऐसा होता है तो उनके लिए आप क्या टिप्स देंगी या क्या सजेशन देंगी कि आप इस कैंपेन से जुड़ रही हैं, किस तरह से वो जुड़ सकती हैं, या क्या ये यूथ के लिए लेके आएगा, ये कैंपेन क्या करने वाला है? It's basically, so not a lot of people come up, like you said, not a lot of girls have that background, or they're not very upfront about what happens to them. So I feel like this awareness should reach to all the youth and the youngsters so that they can open up more about it and be very responsible and careful about what you're putting out there, because everything comes at a cost and you have to be very, very careful and responsible and socially responsible, and your data is all you have, so you can't like carelessly put it out there. You have to be very responsible about what you do. So I think that's what we are looking forward to doing. बात करूँ लव हैकर्स की, तो जब ये फिल्म साइन करी और अब इसका ट्रेलर भी शायद आने वाला होगा कुछ दिनों में, क्या कैरेक्टर होने वाला है और क्या कहानी है इस फिल्म की? It's basically a girl who is very tech savvy, and she's very good at hacking and all that. So before I अच्छा, ये आपकी कहानी है, आप हैं हैकर? नहीं, it's not like that. I just gave you the gist of my character, but it's very much based on cyber crimes, and that's what we're trying to address. और जब ये मूवी का ऑफर जब आया था, मुझे I didn't have a lot of idea about the gravity or the seriousness of cybercrime and all those issues, that even though I have been a victim of cyberbullying and all that, but not to that extent of where people are being traumatized. So they've done a lot of research about it, and that's when they came up with a script, and I got a lot to learn from it. So yeah. ये मतलब किन लैंग्वेजेस में रिलीज होगी? As of now हिंदी. अच्छा, as of now हिंदी. और अगर बात करूँ जैसे आपके
करियर की, तो मतलब इतने छोटे से करियर में अभी आपने हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम सारी लैंग्वेजेस में काम कर लिया ऑलमोस्ट। डिफ़िकल्ट क्या रहता है प्रिया के लिए? डिफ़िकल्ट इज़ डेफिनेटली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, मुझे तेलुगु नहीं पता था, कन्नड़ा नहीं पता था। आई वॉज वेरी कंफर्टेबल विद मलयालम एंड तमिल। हिंदी भी मैनेज कर लेती हूँ, बट putting that extra effort to, you know, sort of learn the language and understand what you're portraying, that is a little extra hard work on your part. So that's a little challenging. और बात करूँ आपकी इंस्पिरेशन की, हर मतलब एक एक्ट्रेस का सपना होता है कि या किसी को देख के हम आगे बढ़ते हैं, आपके लिए कौन इंस्पिरेशन रहा है? I grew up watching a lot of movies actually, irrespective of languages, Malayalam, Tamil, Hindi, English, everything. तो क्या है कि माई मॉम इज़ फ्रॉम कोयम्बतूर, सो शी स्टडीड इन कोयम्बतूर, सो तमिल का बैकग्राउंड उधर से। माई डैड वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे, सो हिंदी का इन्फ्लुएंस उधर से। सो एवरीथिंग इट्स लाइक अ खिचड़ी मिक्सड एट होम, सो आई यूज्ड टू वॉच ऑल सॉर्ट्स ऑफ मूवीज इन ऑल लैंग्वेजेस. So I've had that interest since I was growing up only, like since I remember, maybe 2nd or 3rd grade. So inspiration, I can't like point out one person because I've grown up watching so many like different actors. और अगर जैसे बात करूँ, चलिए आपने बता रहे कोई एक पर्टिकुलर एक्ट्रेस या एक्टर नहीं बोल सकते आप, तो किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगी प्रिया अपने करियर में? When I was growing up, I've watched a lot of movies like कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो. These are the kind of movies that I've watched growing up. So I definitely have that, you know, drive towards rom-coms and romantic movies and fairy tale kind of movies. But yeah, I'm open to playing all sorts of good scripts. और बात करूँ डायरेक्टर की, किसी एक बड़े डायरेक्टर के साथ, जैसे हर एक एक्टर का सपना होता है कि मुझे इनके साथ एक बार ज़िंदगी में काम करना ही है. I think it would be Sanjay Leela Bhansali. भंसाली. I was thinking, जब आपने बोला ना कि वो रोम कॉम और ये फेरी टेल, तो भंसाली ज़रूर आते हैं सबके दिमाग में. अच्छा, रियल लाइफ की बात करूँ अगर, रियल लाइफ में आपके लिए कौन मोटिवेशन है? It is definitely my family and my friends. They are the rock solid support that I've always had. So yeah, it's always them. अच्छा, दिल्ली आई हैं तो कुछ खाया पिया? दिल्ली का खाना बहुत फेमस है. I'm actually a big foodie and a vegetarian. So there are only so many options that I can try. But still many options in Delhi. Yeah, I would love to try out the chole bhature and all. You must. You should. अच्छा, जैसे अगर बात की जाए लव हैकर, मतलब कितना वक्त लगा इस फिल्म को बनने में, या मतलब पैंडेमिक के पहले की बात है ये? क्योंकि पैंडेमिक सबकी लाइफ को एकदम से फुल स्टॉप लग गया था. Yeah, we actually finished shooting pre-pandemic. So it's just been the delay of 2 years because of COVID, or else we are all like set to, you know. और last एक promotional song हम लोग ने recently shoot किया था. Otherwise it was all pre-COVID. We had all completed the shoot and it's ready. अच्छा, Instagram पे आपके कई followers हैं, तो कुछ आज के दौर में भी कुछ ऐसा होता है, किसी का कमेंट आता है या कोई ऐसा फैन है जो आपको मतलब मैसेज करता हो, स्पेशली पर्टिकुलरली डेली, कुछ ऐसे होते हैं? कोई है ऐसा, कोई कुछ आप नोटिस करती हैं? कुछ है ऐसे लोग? Lots of people. बहुत सारे लोग हैं, because people don't understand how, you know, how it works when I open my Instagram. I don't even have to keep refreshing where, you know, all these comments and likes, it's always like updating every second. So it's very hard to like find what's happening on my page. अगर मैं follow कर रही होती हूँ तो I can see, otherwise I can't. But then again, when I get time, I check my message request. तो उसमें होता है बहुत सारा like very sweet. Some are very like comical, some are very sweet. Yeah. अच्छा, उन्हीं फैंस के लिए एक बार मैं चाहूँगी, मतलब आप बहुत बार कर चुकी हैं, मुझे पता है वो, बट स्टिल एक बार न्यूज़ 24 में स्टूडियो में आप बैठी, तो हम ज़रूर चाहेंगे हमारे फैंस के लिए, ऑडियंस के लिए, एक बार वो विंक आपका ज़रूर हो जाए. आई एम श्योर पीपल आर, you know, tired of watching it. You must be tired. They would be loving it. वाह. लड़के बैठे हैं आपको देखने के लिए यहाँ पे. अच्छा, at last क्या कुछ नया आने वाला है? What's next coming? A couple of movies are lined up actually. Most of them, like I said, pre-COVID, it's all set. So since a lot of movies are coming out. हिंदी में भी आ रही है? Yeah, actually Love Hackers, and then I've done another movie in Hindi which they've not officially announced yet.
So waiting for that, and then there's a Kannada movie. I just completed a Malayalam movie. All that's up for release. और एट लास्ट ये भी पूछना चाहूँगी, किस बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करने का मन रखते हैं? Long list. Long It's a list. very long list. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. थैंक यू.